Meantime, shift focus and talk about this morning where another day that we are looking at a thin layer of fog that has enveloped parts of Delhi, and the minimum temperature has now dipped to chilly 9 degrees Celsius. According to the IMD, the biting cold that has gripped the city, disrupting routines and prompting residents to brace for harsher days ahead, especially when it comes to Delhiites, how they are navigating through frosty mornings. And of course, last evening, as there were rains as well that were witnessed, of course, when it comes to the people who have to suffer, who have been suffering rather when it comes to the severe cold wave, and night shelters that are now providing them warm blanket and food for the homeless. Let's in the meantime take a look at how the situation is looking like for the coming days. थोड़ा लगता है कि सर्दी का स्तर थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, एक वो है उसका इशू लग रहा है मेरे को। जैसे बारिश हुई है पोल्यूशन कम हो गया। हाँ मतलब पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है बारिश से, बट ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही है। मतलब सॉल्यूशन नहीं कहूँगा, एक ये कह सकता हूँ कि उसकी वजह से थोड़ी टेम्पररी राहत मिली है, बट इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन तो सरकार को खोजने की जरूरत है ही। ठंड पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन के साथ साथ सांस की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। सरकार को कदम उठाने चाहिए इसके लिए। Well, let's get in a word from Rishabh. Rishabh, last evening it was raining in Delhi NCR, and because of that we are looking at slightly, improvement in the air quality that has been there. But of course it has made the weather even chillier now. Well, definitely, Amita. The graph 4 has been lifted in the national capital. The air quality has bettered a bit, but yes, the pollution still exists. The air quality is still, AQI is still above 300. Though the graph 4s have been removed, the measures of graph 4 have been removed in the national capital, but yes, the pollution continues. The air quality is still in a severe category, and in many places in very poor category. Though there is a slight improvement, but definitely, given the winters, given the air quality, this is how the Delhi air looks like, and you can see on your screens as well as we're showing our viewers that yes, there is smog, there is fog in the national capital. The air quality is still in very poor category in some places and severe category in many places. In the areas where we are near India Gate, the situation looks, it looks foggy. It looks like a foggy winter morning, but definitely when you're breathing, you can feel the smog in the air. Absolutely, because the situation of the AQI may have slightly bettered, but it is still continues to remain in the very poor category. It's been raining last evening in Delhi NCR. Let's in the meantime talk about when it comes to all of the people there, what they have been talking about as far as today morning pictures that have been coming in, as this is a mix of fog and smog that is now had been said that has blanketed the city, posing severe health risks to the residents, with the authorities implementing emergency measures. The struggle, however, for cleaner air continues. इस पे दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, कल बारिश हुई है जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। साथ ही साथ जो पोल्यूशन है वो बढ़ती जा रही है। आने जाने वाले सफ़रों में बहुत मुश्किलें आ रही है, गंदा धुआं अंदर जा रहा है, साथ में ठंड भी है। बहुत जो जिनकी सुबह सुबह की शिफ्ट है उन्हें और ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, और स्पेशली ये बच्चों के लिए काफ़ी घातक है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनका स्कूल दूर पड़ जाता है, उन्हें पहले निकलना पड़ता है, ठंड भी झेलनी पड़ रही है, साथ ही साथ पोल्यूशन भी झेलना पड़ रहा है। पोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है। हम सुबह जैसे यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो पहले से कल बारिश हुई जैसे, उसकी वजह से थोड़ी राहत है पोल्यूशन में, नहीं तो सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। हम मास्क लगा के चलें भी तो कैसे चलें ये बताइए आप। पर जैसे यहाँ पे अभी गाड़ी चल रही है, DDA उनकी सरकारी छिड़काव करते हैं पानी वानी का, तो उससे भी ठीक है, राहत है। लेकिन पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, हवा जैसे चल रही है, बारिश हुई उसके कारण हवा की ठंड है। देखिए हम जैसे जैकेट वैकेट पहन के आए हैं, पर ठीक है काफ़ी, पर मॉर्निंग पे सुबह तो निकलना ही पड़ेगा ना, अब घर पे कैसे। जी बिल्कुल, ठंड तो हो गई है क्योंकि कल बारिश भी पड़ी है, इस वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है, और पोल्यूशन में भी बारिश की वजह से पोल्यूशन में काफ़ी राहत है। लेकिन अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन था। अभी भी हम विजिबिलिटी हमारी बहुत कम है, राष्ट्रपति भवन हमें सही से दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कल से थोड़ा सा राहत है जब से बारिश हुई है, लेकिन उस वजह से जो है ठंड भी बढ़ गई है। Well, Rishabh, what is the IMD now saying as far as the coming days are concerned? Because the temperatures that have been dipping, it is already below 10 degrees Celsius.
Well, Amita, definitely, the temperature is further dipping this morning. It was somewhere around 9 degree around 7 a.m. in the morning when, the Delhi woke up. IMD says that there will be further lower temperature from here. Remember, this is not yet the winter that Delhi, experiences every year, and everyone is bracing for further chilling and elongated winter is what we are given to understand. Given the snowfall in Himachal, in Uttarakhand, in Kashmir, as well as in Ladakh, areas like Haryana, Punjab, Delhi will witness, more winters this year. The temperature will dip further. Remember, in last 2 to 3 years, we have seen that how the temperature has been a problem. Temperature has been continuously dipping time and again, and that is how we have seen that, how Delhi winters are. This is just the beginning of the winter is what IMD also suggests. We'll have more chilly mornings in the coming week. All right. Thank you very much, Rishabh, for that. So cold wave that is likely to continue with very poor air quality and dense fog as well that has been witnessed by Delhiites when they woke up this morning.